9 from ESV heading How long, O Lord? When I read this psalm, I remember psalm number 13 or 16. हेडिंग पढ़ने के समय भजन संगीता 13 या 16 सेम है. हाँ 13 psalm number 13. How long, O God, O Lord? That heading, there is one verse in 13 verse 1. So a psalm of Asaph, only that much is written. So psalm number 71 is one of the most poignant communal lament in the Hebrew Psalter. So this psalm comes under community lament और पूरा समाज का विलाप. पोइग्नेंट करके शब्द का मतलब है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोइग्नेंट, इट हैज वेरी डीप लेवल ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर सिचुएशन, देयर इमोशंस थ्रू एवरी वर्सेस. सो it reflects the anguish of the people of Israel following a national catastrophe. As a nation, they are going to a big tension, big crisis. So everyone together crying and praying to God. That is Psalm number 79. This psalm is attributed to Asaph. We know he was appointed by King David as the chief musician. And Psalm number 73 to 83 comes under the Psalms of Asaph. And this all Psalms comes under the third division, that is book 3. Then you can see the historical context. The historical context, I am reading from this Babylonian. The Babylonians burned the temple, torn down the city walls, and exiled many inhabitants to Babylon. So 2 Kings chapter 25 to 81. So after the time of Hezekiah, his son came. Who was his what is his son's name? Manasseh ही है. हेज़किय्याह राजा का बेटा का नाम सेकेंड किंग चैप्टर Manasseh 20 से लेकर. So the historical evidence of this psalm is 2 Kings chapter 18 to 19 onwards. Second King chapter 19 onwards till 25. After the time of King Hezekiah, because he already committed a big mistake, then his son came, he committed double mistake than his father. Then slowly Babylonian came, I think Nebuchadnezzar II came, and they conquered the land of Jerusalem, and they are going through a time of exile. सताव के बीच में से दासत्व में है बबीलोन में. देन दे आर प्रेइंग टू गॉड. दिस प्रेयर इज अ प्रेयर ऑफ पीपल ऑफ इजराइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर एक्साइल टू बबीलोन. समझ आया नहीं आया? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? 2 King chapter 19 onwards. They committed sin, even the leaders committed sin. Because of that, God allowed Babylonian kings to attack the people of Israel, and the temple was burned down. Then they taken into captivity. Verses 1 to 4, introduction and description of calamity. वो मुसीबत के बारे में पूरा का पूरा विवरण दिया है. Verses 1 to 4. O Lord, O God, the nations have come into your inheritance. ऐसा प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, आपका जगह पर दूसरा नेशंस आकर, राज्य आकर कब्जा किया है. सो वर्सेस 1 to 4 स्पीक्स अबाउट हाउ मच डीपली दे आर सफरिंग. वर्सेस 5 to 10 they are again giving a petition to God. Lord, protect us. So this is a petition for divine action. Verses 8 to 9 asking forgiveness and confession. Verses 8 to 9 confession and forgiveness. Verses 8 to 9 confession and forgiveness. Verses 8 to 9 confession and forgiveness. 10, 11 and 12 asking God to fight against their enemies. Imprecation against enemies.
or asking God to fight against their enemies. Verse 13, woe of praise and hope for restoration. वो लोग वाचा बांधता है और एक रिस्टोरेशन का जरूरत है करके प्रार्थना करता है टू गॉड. Theological themes. First one, it is same with other psalms also, the sovereignty of God. Sovereignty of God. Point number 2, the problem of divine anger. अगर परमेश्वर क्रोध हुआ तो गुस्सा हुआ तो कैसा होता है उसके बारे में. इसलिए वहाँ शायद वचन में लिखा है हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड विल यू बी एंग्री फॉर आवर. वर्स 6 है नहीं, वर्स 5. वर्स 3, covenant and election. Covenant and election. Without knowing anything, the psalmist asking why God is allowing evil or enemy to act upon the people of God. कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन ऑथर ऐसा एक सवाल पूछ रहा है, शत्रुओं का हाथों में क्यों परमेश्वर खुद का लोगों को दिया. वो ऑथर कौन है? मतलब इनको पता नहीं है रीजन क्या है, लेकिन वो पूछ रहा है परमेश्वर से क्यों शत्रुओं के हाथों में हमें दिया, क्यों दिया. पाप का जिंदगी जी रहा था. दे वर लिविंग ए सिनफुल लाइफ. सो गॉड अलाउड देम टू गो टू कैप्टिविटी सो दे कैन लर्न. कितना साल था कैप्टिविटी? बाबिलोन में कितना साल गया? सबूत. Forgiveness and restoration. Point number 5. Then the role of nations. Point number 6. In this psalm, nations described as enemy as well as the instrument of God for the divine judgment. राज्यों को, अलग देश को, अलग राज्यों के बारे में हमारे शत्रु है करके भी बोला गया है. एट द सेम टाइम परमेश्वर उनका लोगों को न्याय करने के लिए इस राज्य को उपयोग इस्तेमाल कर रहा है करके भी लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, बाबिलोन इस्राएल लोगों का क्या क्या है? शत्रु है. लेकिन बाबिलोन का लोगों के हाथों में इन लोगों को देने से इन राज्यों को उपयोग करते हुए परमेश्वर इन लोगों को कुछ सिखा रहा है. सो नेशंस हैज टू मीनिंग्स इन दिस. वन एज एनिमी, सेकंड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, गॉड यूजिंग दोस नेशंस टू मेक द पीपल ऑफ गॉड डिवाइन और क्लीन. कंपैरिजन, वी कैन यूज दिस psalm with 74, then Jeremiah 10, Deuteronomy 32. You can compare this psalm with psalm number 74, Jeremiah 10:25, Deuteronomy 32. And it has literary features like parallelism, imagery, repetition, rhetorical questions, imprecatory language. इस इम्प्रिकेटरी के बारे में हमने पढ़े थे, शायद कमांड का ऐसा कुछ होगा.
इम्प्रिकेटरी का मतलब ये है, एज ए बिलीवर वी से दैट वो शत्रु नष्ट होने पाए, उसके ऊपर आग गिरने पाए, ऐसा बोलते हैं ना, श्राप देने का जैसा. सो इन दिस साम यू कैन सी, आई थिंक इन वी स्टडीड दिस अंडर डेविडिक साम. दाऊद भी कुछ जगह पर एक भजन संगीत में ऐसा बोलता है, शत्रु ऐसा होने पाए, उनका ऐसा उनको नष्ट करना, ऐसा कुछ बोलता है दाऊद भी. देन देयर वाज अ डाउट, कैन वी प्रे एंड कर्स आवर एनिमीज? क्या हम प्रार्थना में हमारे एनिमीज को श्राप दे सकता है क्या? सेम काइंड ऑफ ए साम इज दिस इज ऑल्सो इम्प्रिकेटरी साम, वेयर द ऑथर एंड द पीपल से गॉड डिमोलिश देम, उन लोगों को ये ऐसा करना, उनको नष्ट करना, उनको ये दंड देना करके ये लोग भजन संघ में लिखा है. पढ़ के देखेंगे 79 में. वर्ष 12 पढ़ के देखना, वहां लिखा है. Return 7 flows into the lap of our neighbors and twin which. Okay. So Psalm number 79 gives us a message. Even God is faithful. God is faithful. He will not change. When the people of God do something wrong, He is faithful. He will fulfill His promises. That promise is, if you are not obeying my word, I will punish you. समझ आया? God is faithful. परमेश्वर विश्वासी योगी करके बोलने के समय it has two aspects. When we are good or when we are living a good life, He is faithful to bless us. When we are living a sinful life, He is faithful. He said, if you are not obeying my word, I will surely punish you. Then He will surely punish us. That is the message that we get from the life of Israel and from the message from Psalm number 79 for our present application. समझ आया? Clear? Ravi? Pause.